Recording has been started. Good evening, good evening, everybody. Rituparna, Monica, Vedika, Rajdeep, Sudipta. Yes, so connection is excellent. Recording has been started. Okay, so everything said, discussed, and deliberated. Now, in today's session, this is our first session where we will be talking about concepts. We will be discussing concepts and we will be developing our thought process. We will be developing our understanding of Indian economy, for UPSC prelims. Okay, so in the previous sessions we did analysis and we came to know about 12 important topics. Okay, we made a list of 12 important topics which are very important for UPSC, and we are going to discuss these topics one by one. To start with, we will be starting with basic economics. And the first topic in basic economic is national income. And we will also discuss the process of national income accounting. Okay, so can anybody tell in the comment section what is the unit of measuring national income? How do we measure national income? Can anybody tell in the comment section? कोई बता सकता है नेशनल इनकम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? Okay, Deepali Mehta, per capita national income, very good. But I am asking about the unit, or I am asking about the concept. Which concept represents the national income? Yes, correct. Rituparna Saha, Megha. Yes, GDP. GDP is a concept which represents the national income. Okay, so आपने इन concepts के बारे में सुना होगा. GDP, GNP, NNP, NDP, ऐसे कई सारे concepts आपने सुने होंगे. तो आप कुछ लोग thumbs up भी दे रहे हैं, तो इसका मतलब you are pretty aware about these concepts. Okay, but आज के सेशन में हमें national income क्या है और उसको कैसे measure करते हैं and what are the concepts that represent national income, ये हमें डिस्कस करना है. So there are so many concepts. First is GDP, second is GNP, third is NDP, fourth is NNP. Okay, so there are so many concepts and I think there is a confusion. So much of confusion is there. GDP क्या है, GNP क्या है, और फिर बीच में NDP आ जाता है, NNP आ जाता है, और कई सारे कंसेप्ट्स है और हमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है दिमाग में. और फिर कोई बोलता है कि सर देर इज ऑल्सो वन कंसेप्ट जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. अगेन दिस इज मोर कंफ्यूजिंग. फिर कोई कहता है सर वन मोर कंसेप्ट इज देयर, जीडीपी एट मार्केट प्राइस. ओके, और कोई कहेगा उठ के कि सर अगेन देर इज वन कंसेप्ट विच इज कॉल्ड एज जीडीपी एट बेसिक प्राइस. तो ये इतने सारे कंसेप्ट्स है, इसको किस प्रकार समझना है, इनका मीनिंग क्या है, इनका एक दूसरे के साथ रिलेशन क्या है, और यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू इसका क्या इम्पोर्टेंस है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है. और ये नंबर ऑफ टॉपिक्स जो कंसेप्ट्स है ये सब एक जैसे ही लगते हैं और इसीलिए हमें कन्फ्यूजन होता है. चलिए हम इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं. तो आर यू एक्साइटेड टू क्लियर दिस कन्फ्यूजन? क्या आप लोग एक्साइटेड हो? यस, दीपाली, yes, Monica, Vedika, Sudipta. Okay, everyone is excited, so I am also excited.
So let us talk about the first concept, that is GDP, gross domestic product, GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब यहाँ पे ग्रॉस है, डोमेस्टिक है और प्रोडक्ट है। इन तीनों वर्ड्स के बारे में समझते हैं। जीडीपी के बारे में समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ ग्रॉस। ओके, so in the economics parlance, gross means total। ग्रॉस का एक सिंपल मीनिंग ये है, ग्रॉस इज टोटल। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम पर्सनल इनकम की बात करेंगे, पर्सनल लेवल की बात करेंगे, तो पर्सनल लेवल पे अगर हम बात करेंगे तो पर्सनल इनकम एक चीज होती है, पर्सनल इनकम। ओके, तो अगर मैं मेरे पर्सनल लेवल की बात करूंगा, पर्सनल इनकम क्या है, अगर मैं मेरा टोटल पर्सनल इनकम देखता हूं, फॉर एग्जांपल मेरा टोटल पर्सनल इनकम है 20 लाख पर ईयर, दिस इज माय टोटल पर्सनल इनकम। ठीक है, एक साल में, 1 ईयर में मैं टोटल कितना कमाता हूं, 20 लाख रुपीज। तो दिस इज माय टोटल इनकम। मेरे जितने भी इनकम के सोर्सेस हैं, ये सब मिला के जो सम होती है, दैट इज 20 लाख रुपीज। ओके, and this total income is called as gross income in economic parlance। this total income is gross income। okay, any confusion? If there is confusion, you can ask in the comment section। so all the income from various sources, the total income is called as gross income in the economic parlance। इकोनॉमी में इसे ग्रॉस इनकम कहते हैं। okay? सिमिलरली अगर हम टैक्स कलेक्शन की बात करेंगे, टैक्स कलेक्शन कौन करता है, whose job is tax collection? Government collects tax। so first we understood the concept at personal level, and now we are going to understand the concept at government level। so if in 1 year government collects 100 crore tax, all the taxes, for example GST tax collection, for example income tax collection, for example corporate tax collection, for example there is one tax, minimum alternate tax। so from all the taxation, if government, we are taking an example, so this is an imaginary example, the actual figures are much larger, we are taking imaginary example। so for example, if government collects 100 crore rupees, then this total tax collection is called as gross tax collection। gross tax collection। okay, for example, now we will take the example of a company। initially we discussed about personal level, personal income, then we took example of a government, we talked about gross tax collection, now we are talking about company। for example, in 1 year a company makes profit of 1000 crore, the entire profit of a company from various sources, this is called as gross profit, gross profit। cool, everyone is with me, everyone is getting the point? if yes, if yes, you can raise your hand, there is a button to raise hand। yes, Rajdeep, Rituparna,
Sudipta. Correct. Megha. Very nice. Very nice. Okay. Now, going further. Now, we understood gross. Now, there is another concept, that is net. So, to understand net, let us take again the example of gross income. Gross income. So, from gross income, if we reduce the taxes paid, we get net income. For example, second, gross tax collection, and if we reduce the administrative expenditure, we get net tax collection. Third, if we take gross profit and we reduce taxes paid by the company, then we get net profit. Okay, is this clear? The relation between gross and net? Let me know. Taxes paid plus intermediate consumption. Okay. Okay. Taxes paid plus intermediate consumption. Taxes paid plus intermediate consumption. For example, I am a businessman and my gross income is 20 lakh as explained before. My gross income is 20 lakh rupees. But if I calculate the taxes paid by me, I paid 1 lakh rupees in taxes. I pay 1 lakh rupees in taxes, and 1 lakh rupees is my intermediate expenditure. Intermediate expenditure means whatever I am spending while earning that money. Okay, my fuel expenditure, my travel expenditure, my eating expenditure, everything. The expenditure done while gaining the income. Okay. So 1 lakh rupees taxes paid by me and 1 lakh rupees intermediate consumption, intermediate expenditure. So total expenditure is 2 lakh rupees. Taxes plus expenditure. Now my net income will be 18 lakh. Okay. So if you reduce something from gross income, you will get net income. Another example, gross tax collection. In the previous example, we considered gross tax collection was 100 crore and administrative expenditure was 10 crore. For example, administrative expenditure means expenditure done by income tax department, expenditure done by GST department, the salaries, allowances of government employees, the tax department employees, the all other expenditure of tax department. If you reduce that administrative expenditure, what happens? For example, administrative expenditure is 10 crore and what is remaining? 90 crore. So 90 crore will be net tax collection. For example, gross profit. If a company, for example, Reliance made 1000 crore gross profit. That means total profit of Reliance was 1000 crore in previous year. Taxes paid 10 crore and intermediate consumption was 50 crore. So total expenditure is 60 crore. Now what is remaining? If we reduce this 60 crore from 1000 crore, what we get?
940 crore. So what is 940 crore? 940 crore is the net profit of Reliance Industries. Understood? If everyone understood, please raise your hand. Rishu Yadav, Rituparna Saha, Rajdeep, Upasna, very nice. Deepali, Megha, very nice, very nice. Okay. Now we will further our discussion and we will talk about this. We will talk about this domestic. We will try to understand what is domestic. Okay. We understood about gross and we understood about net. Okay. Now let's talk about domestic, because these terms will be coming in each concept. In each concept we will require these terms. Okay, that's why we need to clear each and every concept. Domestic means, for example, these are the borders of the country. These are the borders of the country. Then domestic means production within the borders of the country. Okay, domestic means within the borders of the country. That means any production that happens inside the borders of the country, then it is called as domestic production. Okay. Now again there is another term, national. National. So the meaning of national is within the border, as well as outside the border. Within the border as well as outside the border. Yes, Rishu Yadav, correct. Within the border means what we have already discussed. This is within the borders. So in national, we calculate within the borders as well as outside the borders. Okay. So this is the difference between domestic and national. Now quickly try to understand, let us try to understand GDP. What is GDP? Gross domestic product. Gross means what? We know gross means total. Very good. Total. Domestic means within the borders. Correct. Production within the borders of the country. And product means what? It is production. Production or income. Production done or income generated. Okay. So what is the definition? Let's talk about the definition of GDP. Definition. And for your convenience, I have divided the definition in 4 parts. Okay, let's see the definition in 4 parts. What is the definition of GDP? GDP, the definition of GDP is money value, second, of all final goods and services produced within the borders of the country, produced within borders in one financial year. Money value of all final goods and services produced within the borders of the country in 1 year. Okay. Now let us understand this definition part by part. Money value means
we measure GDP in rupees or we measure GDP in dollars. So we consider the monetary value, money value. Money value of what? All, all the final goods and services. All those final goods and services produced within the boundary. And produced where? Within the borders of the country. Within the borders of the country. And when? One financial year. Okay. So how to keep this in mind? How to keep this definition in mind? See what? Ask questions. What? What is GDP? It is money value. Okay. Money value of what? Money value of what? Money value of all the final goods and services. Okay. And produced where? Produced where? Within the borders of the country. And produced when? In one financial year. Okay. So I request you, all of you, if you are in the position to switch on your mic, you can repeat with me. Everyone, I request everyone to switch on their mics and repeat after me. Money value of all final goods and services produced within the borders of a country in one financial year. Is this easy? Is this super easy? Please let me know in the comment box. Yes, please. Yes, yes. Okay, what about others? Monica, Dipali, Upasna, Rishu. Just comment yes in the comment box if you find this super easy. Type yes in the comment box. Yes. Money value of all the final goods and services produced within the borders of the country in one financial year. Now any confusion? No confusion. Okay. Let me ask you one question. Yes. Yes, Ritu. See, goods and services. Let's take example of goods. For example, cycle is a good. Laptop is a good. Water bottle is a good. Okay, car is a good. Truck is a good. And what about services? For example, software services, educational services. For example, you purchase a course of online course of Swapna studies, then it is a educational service. For example, health service. For example, medical service. Insurance service. Insurance service. For example, telecom service. For example, internet service. Any service you take. So all the final goods and services. Okay. So let me ask you another question. What if I delete the word final? What happens if I delete the word final from this definition? Please let me know in the comment box. What happens if I delete this word final from the comment box? From this definition. Yes, everyone can unmute. You can unmute your mic. And tell. GDP will increase. Okay. What about other? It will become base level prices. Okay, let's discuss in a very simple words. Okay, Deepali, you are going means see हमें सिंपल लॉजिक लगाना है. हम डिफिकल्ट लॉजिक कब लगाना है मैं बताऊंगा आपको. But until and unless it is necessary, we are going to simplify the things. Okay. See, there are two types of goods. One is intermediate good.
intermediate good, and second there is final good. Intermediate good and final good. For example, let's take an example. Wheat, flour, flour, or you can say atta, and bread packet. Okay, so wheat is a raw material, flour is intermediate good, atta is intermediate good, and bread packet is final good. Final good. Okay, again, next example. Iron or steel, then frame, and then bicycle or bike. So iron or steel is again raw material, frame is intermediate good, and bicycle or bike is a final good. Okay, so while calculating the GDP, we are calculating only the final goods and services. Final goods and services. While calculating the price, we are calculating only the price of bread packet. We will calculate only the price of bicycle. We will calculate only the price of bike. And we will not calculate floor or the price of the frame, or for any matter, or other spare parts. Other spare parts used in the bicycle or bike. For example, there is cushion. So we will not take the price of cushion, because cushion is used in the bike, cushion is used in bicycle. So if we calculate the price of cushion, for example, cushion cost 500 rupees and bicycle is 5000 rupees, bike is 1 lakh rupees. So what will happen? This cushion, the cushion will be calculated twice. If we consider the price of cushion, the price of cushion will be calculated twice. Once when we consider the price of cushion, and second time when we consider the price of bike. So GDP will increase, GDP will inflate unnecessarily. हमें GDP का जो फिगर है वो unnecessarily बड़ा दिखाई देगा. Okay, because we are counting the price two times. If we calculate the price of atta and bread packet, then what will happen? For example, आटा used of rupees 20 rupees का आटा यूज किया, ब्रेड पैकेट का प्राइस है 35 रुपीज, और हम दोनों की प्राइस कैलकुलेट कर रहे हैं. तो व्हाट विल हैपन? द जीडीपी विल से, जीडीपी विल शो 55 रुपीज. तो इसमें आटे का भी प्राइस कैलकुलेट किया, ब्रेड का भी प्राइस का कैलकुलेट किया. अब ब्रेड की जो प्राइस है 35 रुपीज, इसमें ऑलरेडी 20 रुपीज आटे की कॉस्ट आ चुकी है. So to avoid double calculation, we consider only final goods and services, and we don't consider the intermediate goods. Understood my point? Everybody understood? Please raise the hand. Yes, Deepali, Rajdeep, Megha, Ritu, Upasna, Rishu. Very nice. If you have doubt, you can ask in the comment section. Okay. So now we understood the definition of GDP. Okay. Now let's go towards GNP. GNP. अच्छा, ओके, चलो जीडीपी के बारे में थोड़ा और डिस्कशन करते हैं. GDP, as we discussed, the money value of all final goods and services produced within the border of the country in 1 year. Okay,
So if I ask you one question, there is a company called Volkswagen. There is a company called Volkswagen, and it has a production plant in Pune. And for example, this is our India. These are the borders of the country. And in Pune, there is a plant of Volkswagen. And Volkswagen produces cars in Pune plant. So, will are we going to calculate the price of car in GDP? Yes or no? Are we going? Yes, yes. We are going to calculate the price of car in GDP because cars are final goods and these cars are produced within the borders of our country. Okay, for example, Parle G production happens in Chandigarh. For example, Parle G के जितने भी पैकेट्स है जो चंडीगढ़ में प्रोड्यूस हो रहे हैं, they are being produced within the border of the country. So we are going to calculate their price as well. For example, फायरवर्क्स, दिवाली में फायरवर्क्स क्रैक किए जाते हैं, फायर क्रैकर्स. शिवाकाशी इन तमिलनाडु is a small town and it is very famous for fireworks, firecrackers. So are we going to consider the price of these firecrackers produced in Shivakási? Are we going to calculate the price of firecrackers in GDP? Yes, because these firecrackers produced in Shivakási, they are produced within the borders of the country. Okay, now again take third example, Reliance. And Reliance has a factory in Mauritius. And Reliance produces oil. Okay, for example, mineral oil. Reliance has oil refinery there. Okay, and Reliance produces oil, but the factory is where? In Mauritius. So are we going to calculate the price of this oil in our GDP? Yes or no? Yes, we are going to talk about GNP later on, but for time being, for now, we are not going to consider the price, this price in GDP. We are not going to consider the price of oil produced in Mauritius in our GDP. Okay, again one example. For example, take any foreign company. Okay, Google. Google has one product, Google Pixel. Okay, Google Pixel, आपको पता है फोन है गूगल का, and this Pixel is produced in China. Okay, Google का ऑफिस बैंगलोर में भी है फॉर एग्जाम्पल, but they are producing Google Pixel in China. So are we going to calculate their price in GDP? No. Why? Because that Google Pixel is not produced in the border of the country. Okay, again take Indian example, Indian company. For example, Ellen Mittal, Lakshmi Nivas Mittal. Okay, so Lakshmi Nivas Mittal is Indian person and he has a steel plant in France. You might be aware, ArcelorMittal. ArcelorMittal is a steel plant, big steel plant in France. So are we going to calculate the price of this steel in our GDP? Because this steel is produced in France. So, for example, assume that the company is Indian company. But even if Indian company produces anything outside the border of the country, then we will not be considering that in our GDP.
Yes, if an Indian company produces something in other country, then that production is outside the border of the country. कोई भी इंडियन कंपनी आप ले लो, कोई आप किसी कंट्री कंपनी का नाम बताइए. टेल मी वन इंडियन कंपनी दैट इज प्रेजेंट ग्लोबली. बताइए. फॉर एग्जांपल एशियन पेंट्स. फॉर एग्जांपल एशियन पेंट्स. यस, दिस इज इंडियन कंपनी. एंड एशियन पेंट्स produces a paint in, for example, मलेशिया. मलेशिया में उनका प्रोडक्शन यूनिट है. So are we going to calculate the price of Asian paint box in our GDP? Asian paint is Indian company, but they are producing outside the border of the country. No. Even if the company is Indian, we are not going to calculate their price because they are producing outside the border of the country. Clear? ऋतु बताइए, समझ में आ गया? Payala Shravani, this is your first lecture. Please let me know in the comment box you are getting the point or not. Okay, Rishu Yadav is getting the point. Okay, so even if the company is Indian, but the production is outside the borders of the country, then we don't calculate it in the GDP. So again, let's summarize GDP. GDP is money value of all final goods and services within the borders, and 1 year within the borders, produced within the borders in 1 year. Okay, now what is GNP? What is GNP? GNP considers within the borders as well as outside the borders. Okay, within the borders as well as outside the borders. इसका मतलब जीएनपी में हम जो प्रोडक्शन है जो बॉर्डर्स के अंदर हुआ है उसको भी देखते हैं और जो बॉर्डर के बाहर है उसको भी देखते हैं. ठीक है, तो कैन वी से दैट जीएनपी is equal to GDP plus income from abroad? Can we say GNP is GDP plus income from abroad? Yes, correct Deepali, correct. Company is Indian but produces outside, so it is not calculated in GDP. Correct. Okay, Rishu Yadav, Payala Shravani, raise hands. Yes, we can say GNP is equal to GDP plus income from abroad. So what is the meaning of this? What is the meaning of this? See, GNP means the production within the borders. Production within the borders. That means we can consider GDP here. Okay, what all we are producing within the borders of the country, हम कंट्री के बॉर्डर के अंदर जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हम सब कंसिडर करेंगे जीएनपी में. और उसका मतलब क्या है, अल्टीमेटली क्या देख रहे हैं, जीडीपी ही देख रहे हैं. ओके, एंड व्हाट इज आउटसाइड, कि जो प्रोडक्शन हम आउटसाइड कर रहे हैं,
जो भी प्रोडक्शन हम आउटसाइड द कंट्री कर रहे हैं, जो भी हमारा ये फॉर एग्जांपल दीज आर द बॉर्डर्स, और बॉर्डर्स के बाहर जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन आउटसाइड द कंट्री, वो भी हम देख रहे हैं। ओके, और जीएनपी का फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस नेशनल इनकम। तो जीएनपी का मतलब है ग्रॉस नेशनल इनकम या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट एंड इनकम दे आर सिमिलर वर्ड्स, इनका सेम मीनिंग होता है। प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, इनकम भी बोल सकते हैं। तो व्हाट इज जीएनपी? इट इज अ टोटल वैल्यू ऑफ एवरीथिंग प्रोड्यूस्ड विद इन द बॉर्डर्स एज वेल एज आउटसाइड द बॉर्डर्स। समझ में आया क्या? बताइए, प्लीज रेज योर हैंड्स। यस, तो एक बार फिर से बताता हूँ, एक बार फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इसको। डोमेस्टिक मीन्स ओनली इनसाइड और विद इन द बॉर्डर्स। ओके, national, national means inside, yes, inside as well as outside। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम देखते हैं सिर्फ प्रोडक्शन विद इन द बॉर्डर्स एंड प्रोडक्शन इनसाइड द कंट्री। एंड नेशनल में हम क्या देखते हैं? प्रोडक्शन इनसाइड द कंट्री तो देखते ही है, बट उसके साथ साथ कंट्री के बाहर जो भी प्रोडक्शन है तो भी हम देखते हैं। ओके, तो अभी देखिए थोड़ा सा और इसको डिटेल में समझाता हूँ। ये जो जीएनपी है, इसका फॉर्मूला है जीडीपी प्लस नेट फैक्टर अर्नड फ्रॉम अब्रॉड। जीडीपी, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर अर्न फ्रॉम अब्रॉड। हमने जीएनपी के बारे में क्या देखा था? इट इज इनसाइड प्लस आउटसाइड, प्रोडक्शन इनसाइड द कंट्री एज वेल एज प्रोडक्शन आउटसाइड द कंट्री। अब जीडीपी क्या रिप्रेजेंट करता है? व्हाट जीडीपी रिप्रेजेंट्स? प्रोडक्शन इनसाइड द कंट्री। GDP represents production inside the country. And what this represent? Net factor from abroad. It represent production outside the country. Okay? Production outside the country. Now, let us discuss how this net factor income from abroad is calculated. Net factor income from abroad. See, this is our country, this is our India. Okay? And India imports many things. Yes or no? India imports many things as well as India exports many things. So imports and exports. Okay? Yes or no? If India is importing something, India has to pay in dollars. India has to pay in dollars. If India is exporting something, then India earns money in dollars. अगर इंडिया कुछ इंपोर्ट करता है तो डॉलर में पे करना पड़ता है। इंडिया अगर कुछ एक्सपोर्ट करता है तो डॉलर में रिसीव करना किया जाता है। तो क्या क्या इंपोर्ट किया जाता है और क्या क्या एक्सपोर्ट किया जाता है? क्या क्या इंपोर्ट किया जाता है, क्या क्या एक्सपोर्ट किया जाता है? तो एक सिंपल फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और देयर आर 4 मेजर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और भी है,
बट 4 मेजर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है. वन इज मैन, सेकंड इज मनी, थर्ड इज मशीनरी एंड फोर्थ इज मटेरियल. मैन, मनी, मशीनरी, मटेरियल. मैन मीन्स क्या? लेबर. मनी मीन्स क्या? कैपिटल. मशीनरी मीन्स मशीनरी एंड मटेरियल मीन्स रॉ मटेरियल. एंड एक्सपोर्ट क्या किया जाता है? लेबर्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक्सपोर्ट किए जाते हैं. मैन, मनी, मशीनरी एंड मटेरियल. मैन का मतलब क्या है? लेबर. लेबर हम एक्सपोर्ट करते हैं. इंडिया से कई सारे इंजीनियर्स दूसरे कंट्री में जाते हैं. दैट इज कॉल्ड एज एक्सपोर्ट ऑफ लेबर. एक्सपोर्ट ऑफ मनी मीन्स एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल. इंडिया से कैपिटल बाहर इन्वेस्ट किया जाता है. एक्सपोर्ट ऑफ मशीनरी मीन्स इंडिया से मशीनरी भी एक्सपोर्ट की जाती है. एंड एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल मीन्स इंडिया से रॉ मटेरियल भी एक्सपोर्ट किया जाता है. ठीक है, तो इसे हम कहते हैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ फैक्टर्स. इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ फैक्टर्स. अब देखिए, जब हम कुछ इंपोर्ट करते हैं तो हमें पैसा खर्च करना पड़ता है. तो व्हाट वी कॉल इट? इट इज इंपोर्ट expenditure. Whenever we import something, we have to spend money, which is called as import expenditure. Whenever we export something, we earn money and it is called as export income. Export income. Okay? अभी तक सबको समझ में आ गया? Any doubt till now? Import expenditure and export income. Please raise your hands if you understood. If you are importing something. Yes, Deepali, very nice. Rajdeep. What about Upasna, Megha, Shravani? To correct. If you are importing something, you have to pay bill in dollars and it is called as import expenditure. If you are exporting something, then you earn money in dollars, which is called as export income. Which is called as export income. Let us assume that हमने import किया $100 का, हमने इंपोर्ट किया, तो हमारा इंपोर्ट एक्सपेंडिचर कितना हुआ? $100. लेट अस अज्यूम हमने $500 का एक्सपोर्ट किया, तो इसका मतलब $500 हमने कमाए और हमारा इनकम कितना हुआ? $500. अगर हम इसका बैलेंस देखते हैं, तो 500 रुपीज़ हमारे पास आए, तो प्लस 500 रुपीज़, $500. $100 हमने खर्च किए, इंपोर्ट एक्सपेंडिचर में हमने खर्च किए, तो माइनस $100. बचा कितना? व्हाट इज द रिमाइंडर? इट इज $400. इट इज $400. व्हाट इज दिस $400? हमने इस पूरे ट्रांजैक्शन में क्या किया है? हमने $400 कमाए हैं. हमने $100 खर्च किए इंपोर्ट पर और हमने $500 कमाए हैं. एंड व्हाट इज दिस $400? ये जो बचे हुए $400 है, दिस इज इनकम फ्रॉम अब्रॉड. दिस इज आवर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड, जिसको हम पर्टिकुलरली कहते हैं इट इज नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड. दिस इज कॉल्ड एज नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड. नेट क्यों कहते हैं? नेट क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बैलेंस किया है. हमने एक्सपोर्ट इनकम, जो हमारा $500 था एक्सपोर्ट इनकम, इसमें से $100 का इंपोर्ट एक्सपेंडिचर माइनस किया है, इसीलिए हम इसको नेट कहते हैं. फैक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक्सपोर्ट किए है, उसमें से हमने पैसा कमाया है. ठीक है, लेट मी करेक्ट हियर, इट इज नेट फैक्टर इनकम.
अर्न फ्रॉम अब्रॉड, ऐसा है ये। इसका शॉर्ट फॉर्म है NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। समझ में आया क्या? कमेंट करके बताइए। नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, GDP प्लस नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू GNP। यस, Rajdeep, very nice. So, yes, Deepali, very good. What about Rishu? What about, yes, Mega को भी समझ में आ गया, दीपाली को भी समझ। What about Shravani? Payali Shravani? Yes, understood. Very nice. आपकी कमेंट अभी हमने देखी है। So, this was the concept of GDP and GNP. Okay. So, क्या आपको ये ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही बेसिक पढ़ा रहा हूँ, कि सर ये तो बहुत ही इजी है, ये तो हमको समझ में आ गया ऑलरेडी, आप बहुत ही डिटेल में पढ़ा रहे हैं? या फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर, वी आर गेटिंग एवरीथिंग, हमारा सारा कन्फ्यूजन दूर हो रहा है? जस्ट मुझे कमेंट करके बताइए, जस्ट मुझे कमेंट करके बताइए व्हाट यू आर थिंकिंग। कन्फ्यूजन इज गेटिंग क्लियर। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। दीपाली का कहना है कि उनका कन्फ्यूजन क्लियर हो रहा है, तो क्या बाकी लोगों को भी लगता है? तो प्लीज रेज योर हैंड। करेक्ट, ओके, उपास, मेघा, वेरी नाइस। Because see, I am asking this question because I need to understand what is working and what is not working for you. अगर आपको लगता है कि सर बहुत ही इजी पढ़ाते हैं, ये सब आपको पता है, आप थोड़ा सा हायर लेवल का पढ़ाइए, तो मैं उस प्रकार से आपको पढ़ाऊंगा। अगर आप कहेंगे सर नो, यू आर गोइंग गुड, आप इसी प्रकार से पढ़ाइए, कंटिन्यू, तो हम उसी प्रकार से कंटिन्यू करेंगे। ओके, so today what we discussed two important things. One is GDP and second is GNP. Okay, now what is third concept? NDP. अब NDP आप बहुत इजीली समझ जाओगे. It is very easy for you now to understand the concept of NDP. Okay, see, there is the concept of GDP. GDP, what is GDP? Money value of all final goods and services produced within the borders of the country in 1 year. Okay, and here there is NDP. And what is NDP? Net domestic product. N means net, D means domestic, P means product. Okay, so if you carefully observe here, product is same, domestic is same. Okay, मैं फिर से बताता हूँ, आप यहाँ GDP है और यहाँ पे NDP है। प्रोडक्ट सेम है, डोमेस्टिक सेम है। व्हाट हैज चेंज्ड? ग्रॉस का हुआ है नेट। ओके, जी का मतलब है ग्रॉस, एन का मतलब है नेट। तो अब आप GDP से क्या माइनस करोगे तो आपको NDP मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा डेप्रिसिएशन। Depreciation. No. We are talking about NDP. NDP, Net Domestic Product. हमने ये देखा था, ग्रॉस में से आप कुछ भी माइनस करते हो तो आपको नेट मिलता है। ओके, फ्रॉम जी इफ यू गो टू नेट यू हैव टू रिड्यूस समथिंग। तो इन दिस केस GDP, इसमें से जब आप डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो आपको NDP मिलता है। ना व्हाट इज डेप्रिसिएशन? सिंपल बताता हूं मैं, सिंपल। डेप्रिसिएशन का मतलब है कि आप जब भी किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं
तो आपकी मशीनरी डेप्रिसिएट होती है, आपकी मशीनरी में मूविंग पार्ट्स बहुत होते हैं और इसीलिए उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाती है मशीनरी की, एंड दैट इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन। इसका सिंपल एग्जांपल मैं बताता हूं कि आप हर किसी के घर में मिक्सर ग्राइंडर होगा, मिक्सर ग्राइंडर, यस, 1 साल पुराना, 2 साल पुराना, 3 साल पुराना, 5 साल पुराना होगा। ओके, तो जैसे जैसे वो मिक्सर ग्राइंडर पुराना होता है उसमें मूविंग पार्ट्स होते हैं और वो धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होती है, डेप्रिसिएशन होता है। उसके जो ब्लेड्स है वो ब्लेड्स खराब हो जाते हैं, उसके अंदर जो मोटर है वो मोटर खराब हो जाती है, उसके अंदर जो वाइंडिंग है, जो वायरिंग है वो खराब हो जाती है, एंड दिस इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन। एंड सिमिलरली एट नेशनल लेवल, इंडस्ट्री लेवल पे, फैक्ट्री लेवल पे, एवरीवेयर देयर इज अ डेप्रिसिएशन। ओके, तो अगर इस डेप्रिसिएशन को अगर आप कैलकुलेट करोगे और आपके ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से उसको माइनस करो तो आपको मिलेगा एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, व्हाई व्हाई वी आर रिड्यूसिंग द डेप्रिसिएशन, व्हाई वी आर कंसिडरिंग द डेप्रिसिएशन? क्योंकि व्हाट इज जीडीपी? सी, जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल आवर जीडीपी इज 100 crore rupees। ओके, इसका मतलब वी हैव प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जिनका जो टोटल प्राइस है वो 100 crore rupees है। बट वाइल प्रोड्यूसिंग दीज गुड्स एंड सर्विसेज हमारी मशीनरी खराब हुई है, हमारी मशीनरी डेप्रिसिएट हुई है और उसका डेप्रिसिएशन फॉर एग्जांपल 1 crore का है। उस डेप्रिसिएशन की अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और 1 crore कंसिडर करते हैं और उस 1 crore को अगर हम हमारे जीडीपी से माइनस करते हैं तो हमारा एनडीपी क्या रहेगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हमारा एनडीपी रहेगा एनडीपी, हमारा एनडीपी रहेगा 99 crore rupees। ओके, अब हम कह सकते हैं कि दिस इज आवर रियल प्रोडक्शन, दिस इज आवर रियल प्रोडक्शन, क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन को कंसिडर किया, क्योंकि हमारी मशीनरी खराब हुई है। हमें इस मशीनरी को, जो भी मशीनरी यहाँ पे हमने यूज की है, इसको डाउन द लाइन आपको कुछ साल के बाद इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल किसी मशीनरी की जो लाइफ होती है वो 15 ईयर्स होती है। अब वो 15 ईयर्स के बाद वो मशीन खराब हो जाएगी तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा आपको। तो ये डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी बता देता हूं मैं आपको। ये डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी बता देता हूं। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर है, ओके, 1 लाख का कंप्यूटर है और इसकी जो एज है ये 10 ईयर्स है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो कंप्यूटर है ये 10 ईयर्स के बाद खराब हो जाएगा, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, 10 ईयर्स के बाद रिप्लेस करना पड़ेगा। तो 1 लाख को अगर हम 10 ईयर से डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5, ये 1 लाख रुपीज को अगर हम 10 ईयर्स से डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब 10,000 पर ईयर। इस कंप्यूटर का जो डेप्रिसिएशन है हर साल कितने रुपए से होगा? 10,000 रुपीज से होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? 1 लाख रुपीज इसकी प्राइस है और हर साल कितना डेप्रिसिएशन हो रहा है? 10,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन हो रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 100, मतलब 10% का डेप्रिसिएशन है। करेक्ट? तो इस प्रकार से हमें
हमारे डेप्रिसिएशन को हम कैलकुलेट करते हैं। हर इंडस्ट्री के लिए ये डेप्रिसिएशन का जो नंबर होता है वो फिक्स होता है। और जैसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, कंप्यूटर इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, हर इंडस्ट्री के लिए ये डेप्रिसिएशन अलग अलग होता है। किसी के लिए 5%, किसी के लिए 10%, किसी के लिए 15%, एंड सो ऑन। और जीडीपी जीडीपी हमारा जीडीपी अगर 100 रुपीज़ है, और इसमें से अगर हम हमारा डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, फॉर एग्जांपल 10% डेप्रिसिएशन है, मतलब 10 रुपीज़ अगर हम माइनस करते हैं तो 90 रुपीज़ ये हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा। ओके, एवरीथिंग क्लियर? बताइए मुझे, सब समझ में आ गया? तो आज हमने कितने कंसेप्ट कवर किए? जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी। प्लीज रिप्लाई फास्ट और रेज योर हैंड। अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज रेज योर हैंड। यस। Payala Shravani, today this is your first lecture. Yes. So let us meet tomorrow, same time, same link, without means please do not miss this class. These classes are very important. 1 week free demo classes, 8 January to 12 January. Now only 2 days are remaining. Tomorrow and day after tomorrow. कल और परसों सिर्फ लास्ट 2 लेक्चर्स है, ये आपके लिए सबके लिए फ्री है। इसका रिकॉर्डिंग हम ऐप पे डाल रहे हैं। यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग इन ऐप। ऐप का लिंक आपके सबके पास है, आपको आया होगा। मैं फिर से शेयर कर देता हूँ। और आपके पास मंडे तक का समय है। मंडे इज़ लास्ट डे। मंडे तक आपको एडमिशन आपकी कंफर्म करनी है। ठीक है, मैं आपको स्क्रीन दिखाता हूँ। लेट मी शो माई स्क्रीन। यू कैन सी दिस स्क्रीन। दिस इज़ आवर कोर्स। इसका लिंक मैंने भेज दिया है आपको। कॉन्कर इंडियन इकोनॉमी फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। ओके, थर्ड आपको ऑलरेडी 47% ऑफ दिया गया है। एंड अगेन यू कैन यूज इको 25। ये आपके लिए ऑफर कोड है। नाउ यू कैन यूज दिस ऑफर कोड एंड परचेज दिस कोर्स। ठीक है, और ये ऑफर कोड सिर्फ 15 जनवरी तक आपके लिए वैलिड रहेगा। ठीक है, मुझे आप ये भी बताइए कि सिर्फ एनसीईआरटी कोर्स, एनसीईआरटी कोर्स में कितने लोग इंटरेस्टेड है कि सर हमें सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाइए, हमें बेसिक ही पता नहीं है? ओके, उपासना, राजदीप, मेघा। ओके, तो देखिए, जिस नंबर से आपको मैसेज आया है व्हाट्सएप पे, एक बार उस व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दीजिए एनसीईआरटी कोर्स। देर आर 5 एनसीईआरटीज जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। मैं इकोनॉमिक्स के साथ साथ मैं आपको हिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ। मेरा हिस्ट्री रिलेटेड भी एक कोर्स है। हमारे ही ऐप पर ये कोर्स है। यू कैन गो एंड विजिट हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया इन 24 आवर्स। सी, दिस इज द कोर्स, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया इन 25 आवर्स। 25 आवर्स में पूरा का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री मैंने पढ़ा दिया है आपको। तो यू कैन सी दैट कोर्स एज वेल। और अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी कोर्स में इंटरेस्टेड है तो वो भी कोर्स हम लेकर आएंगे। अगर आपको लगता है कि जो अभी हम पढ़ रहे हैं तो वो थोड़ा सा हाइयर लेवल का है और हमें बेसिक लेवल का कोर्स चाहिए, एनसीईआरटी बेस्ड कोर्स चाहिए, तो वो भी हमारे पास ओनली एनसीईआरटी कोर्स भी अवेलेबल है। ओके, हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपके साथ कॉल करेंगे और आप उनको बताइए कि आप किस कोर्स में इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो, लास्ट 2 days आर रिमेनिंग।
Please don't miss the class. Take benefit of these free demo classes. And if my teaching is appealing to you, if you like my teaching, then enroll to this course, Conquer Economy in 45 days, or the UPSC NCRT course. Okay, so again, UPSC NCRT course will be step by step course, which will teach you the basic concepts from all the NCRTs, all the important NCRTs of UPSC economy. So I'm taking leave today. Let's meet tomorrow evening, same time, same link. ओके, और अगर आपको मेरा टीचिंग अच्छा लगा है तो हमारे ऐप पर जाकर आप एक अच्छा रिव्यू मुझे दीजिए, ताकि आने वाले जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वो बेनिफिशियल होगा. तो प्लीज़ गिव योर फीडबैक, लीव योर फीडबैक इन माय स्वप्न स्टडीज ऐप. थैंक यू सो मच.